Dear students, I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in Banwari Lal Jindal Soiwala College, Tosham, District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver a lecture on number theory and trigonometry for the students of BA BSc first semester second. Today I will discuss the topic of today lecture is inverse circular. The chapter I will cover is inverse circular and inverse hyperbolic. Inverse circular and inverse hyperbolic functions. Chapter 11. We will do. We have done inverse circular functions and its formulae up to now. We will prove some formulae of inverse circular functions. To prove that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. Second, tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse x minus y. Third, tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z equal to tan inverse x plus y plus z minus xyz divided by 1 minus yz minus zx minus xy. Proof: let tan inverse x equal to capital A implies x equal to tangent A, and tan inverse y equal to v implies y equal to tangent v. Therefore, we know that tangent A plus b equal to tan tangent A plus tangent v, 1 minus tangent A tangent v, or tangent A plus b equal to x plus y divided by 1 minus xy implies A plus b is equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. Putting the value of A and B from first and second in third, we get tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. Proof: similarly we can prove second and third. For negative sign and for 3, tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z. Now note, result 1 is valid when xy less than 1 and result second is valid when xy greater than minus 1. Third result, tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z equal to, me taking first tan inverse x plus y divided 1 minus xy plus tan inverse x equal to tan inverse x plus y 1 minus xy plus z 1 minus z x plus y 1 minus xy tan inverse x plus y plus z minus xyz divided by 1 minus yz minus zx minus xy. This is the formula which we want to derive. This is corollary. Putting x equal to y in the result 1, we have 2 tangent inverse x tan inverse 2x 1 minus x square, which we have got in trigonometry. Here we have only complex variable. No complex, you have inverse. This is a higher trigonometry. Putting x equal to y equal to z in result third, we have tangent inverse x plus tangent inverse x plus tangent inverse x. Taking 3 equal, then tangent inverse 3x minus x cube 1 minus x square. Therefore, 3 tangent inverse x is equal to tan inverse
3x minus x cube 1 minus x 3x square. To prove sin inverse x equal to cos inverse under root 1 minus x square equal to tan inverse x with a under root 1 minus x square equal to cot inverse under root x 1 minus x square with x equal to secant inverse 1y under root 1 minus x square equal to cosecant inverse 1y x. Second is cos inverse x equal to sin inverse under root 1 minus x square equal to tangent inverse under root 1 minus x square yx. Secant inverse 1yx equal to cosecant inverse 1y under root 1 minus x square equal to cot inverse x with a under root 1 minus x square. Third is tangent inverse x equal to sin inverse x with a under root 1 plus x square plus is equal to cos inverse 1 by under root 1 plus x square. Cot inverse 1yx equal to cosecant inverse under root 1 plus x square with x. Secant inverse 1 under root 1 minus 1 plus x square. Proof: let sin inverse x equal to theta implies x equal to sin theta. Now cos theta is equal to using trigonometry under root 1 minus sin square theta is equal to under root 1 minus x square implies theta we get cos inverse under root 1 minus x square. Also tangent theta expand it sin by cos sin theta by cos theta, and we have now the value of sin theta and cos theta. Putting these values x with under root 1 minus x square implies theta equal to tangent inverse x with under root 1 minus x square. Cot theta equal to 1 by tangent theta under root 1 minus x square by x implies theta equal to cot inverse under root 1 minus x square by x. Secant theta, we are just putting the values, nothing else. 1y cos theta under root 1y under root 1 minus x square, theta equal to secant inverse x. Secant inverse x 1y, this formula. Cosecant theta one by sin theta 1 by x, as theta equal to sin inverse x equal to cos inverse under root 1 minus x square equal to tangent inverse x with a under root 1 minus x square is equal to cot inverse under root 1 minus x square by x equal to secant inverse 1 by under root 1 minus x square cosecant inverse 1 by x. Similarly, we can prove results second and third. To prove 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube, 3 cos inverse x equal to cos inverse 4x cube minus 3x. Prove let put sin inverse x equal to capital A implies sin equal to x. Now sin 3a equal to 3 sin a minus 4 sin cube a equal to 3x minus 4x cube, or 3a equal to sin inverse 3x minus 4x cube, that is 2 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube. Let which we want to prove. हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम साइन थीटा ले रहे हैं और उसको साइन एक्स निकालना, तो इन्वर्स उधर ले जाओ उसको. जैसे साइन 3a हमारा आ गया 3x माइनस 4x क्यूब. अब 3a निकालना तो साइन इन्वर्स राइट हैंड साइड को ले गए, तो 3a इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब. अब a की वैल्यू रख दी यहाँ 3 साइन इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब. इसी तरह हम दूसरा भी निकाल लें. लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो इम्प्लाइज कॉस ए इक्वल टू एक्स एंड कॉस 3x इक्वल टू 4 cos cube a minus 3 cos a. This is the trigonometry, use of trigonometry.
and cos a is x and cos cube a is x cube, 4x cube minus 3x, or 3a is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. Therefore 3 cos inverse x equal to cos inverse 4x cube minus 3x. To prove that, another formula is sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. Sin inverse x minus sin inverse y is equal to sin inverse x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square. Cos inverse x plus cos inverse y equal to cos inverse xy minus under root 1 minus x square under root 1 minus y square. Cos inverse x minus cos inverse y equal to cos inverse this. The proof is let sin inverse x equal to a, so x equal to sin a. Therefore cos a equal to under root 1 minus sin square a using trigonometry equal to under root 1 minus x square. एंड साइन इनवर्स y इक्वल टू b पुट कर लिया इसको, y साइन v हो गया, तो cos b इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. नाउ अगेन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री साइन a प्लस माइनस b, साइन a cos b प्लस माइनस cos a साइन b यूजिंग द formula of respective terms is equal to x under root 1 minus y square plus minus under root 1 minus x square into y. And taking a plus minus b, साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले गए, a की वैल्यू रखी b की वैल्यू रखी, डेट इज साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. Proof 3 and 4, let cos inverse x equal to a, तो x implies x equal to cos a. Therefore sin a is equal to under root 1 minus cos square a. cos इनवर्स y इसी तरह v हो गया, y इक्वल टू cos b हो गया, sin b ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर. नाउ cos a माइनस a प्लस माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस माइनस प्लस उल्टा हो जाएगा, साइन a साइन b, x इंटू वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो a प्लस माइनस b इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो रिजल्ट्स नोट, 1 is valid if x square plus y square less than equal to 1 and y is non-negative, x y greater than equal to 0. Result second is valid if x y lies between 0 and 1. Result third is valid if x y lies between 0 and 1. Result 4 is valid if x y x less than y and lies between minus 1 and 1. These are the results. हाँ और ठीक हो. These are 4 results, and these are valid note we have given. First result is valid if x square plus y square is less than equal to 1, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. Result second is valid if this hold. Corollary, putting y equal to x in 1 and 3 we get 2 sin inverse x equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square, and 2 cos inverse x cos inverse 2x square minus 1. To prove that cot inverse x plus cot inverse y equal to cot inverse x y minus 1 divided by y plus x.
cot inverse x minus cot inverse y equal to cot inverse xy plus 1 divided by minus x. Proof is let cot inverse x equal to a implies cot a is equal to x, cot inverse y equal to b. cot को राइट हैंड साइड में ले गए तो y रह गया cot b. Therefore now cot a plus minus b using trigonometry, cot a cot b minus plus 1 divide cot b plus minus cot a equal to xy minus plus 1 बटे y plus minus x, और a plus b equal to cot inverse xy minus plus 1 divided by y plus minus x, that is cot inverse x plus minus cot inverse y equal to cot inverse xy minus plus 1 divided by y plus minus x. These are the formulae for inverse circular functions. Now we will take one or two examples in this lecture. Prove that tangent inverse half plus tangent inverse 1 by 3 equal to pi by 4, cos inverse 4 by 5 plus tangent inverse 3 by 5 प्रूव करने हैं हमने टेंजेंट इनवर्स बाई 27/11. एंड थर्ड एग्जांपल इज साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू पाई बाई 2. फर्स्ट एग्जांपल टेंजेंट इनवर्स हाफ बस फर्स्ट पार्ट प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3 यूजिंग दिस फार्मूला tan इनवर्स x plus y. Here x is half plus y is 1/3. 1 minus x into y, 1 minus half into 1/3. So tan inverse 5/6 by 5/6, tan inverse 1 equal to pi by 4. And for second part cos inverse 4/5 equal to let theta मान लो इसको पहले पार्ट को, तो cos theta 4/5. Therefore tangent theta expand it साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एंड साइन थीटा का फिर कॉस में कन्वर्ट √1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस थीटा, √1 माइनस कॉस थीटा हमें ऊपर निकाला है 4/5 है, तो वैल्यू पुट कर दे इसकी 16/25 हो गया बटे 4/5 और सिंप्लीफाई 3/4. तो थीटा इक्वल tan इनवर्स 3/4 इम्प्लाइज कॉस इनवर्स 4/5. ऊपरला क्या है और नीचे वाला 3/4 दोनों बराबर हैं, इसलिए cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. देयरफॉर cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, रिप्लेस इट, cos इनवर्स को 4/5 को रिप्लेस कर दो टेंजेंट इनवर्स 3/4 से. अगेन फार्मूला पुट करो tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5, 1 माइनस 3/4 3/5. तो ये फार्मूला सिंप्लीफाई होकर tan इनवर्स 27/11 आ जाएगा. तो ये फर्स्ट पार्ट आपका, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया था, ये सेकंड पार्ट हो गया तीनों. अब थर्ड पार्ट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65. इसको यूज़ करो फार्मूले को जो हमने किए हैं. साइन इनवर्स 4/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर 5/13 का होल स्क्वायर प्लस 5/13 √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर. तो साइन इनवर्स इसको सिंप्लीफाई किया अंदर वाले को 16/65. तो साइन इनवर्स दिस खोलो इसको, 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 25/169, 4/5 का स्क्वायर 16/25 इक्वल प्लस साइन इनवर्स 16/65. अब इसको अंदर वाले को सिंप्लीफाई किया, साइन इनवर्स 4/5 12/13 प्लस 5/13 इंटू 3/5 साइन इनवर्स 16/65 साइन इनवर्स 46, ये साइन इनवर्स 16/65 आ गया. तो साइन इनवर्स 63/65